So Z score is essentially a evaluation ki, let's say as Domino's we are promising to the world that I would give myself a target of 30 minutes. 30 minutes में मैं पिज्जा खिलाऊंगा. If I exceed this, exceeding the 30 minutes is not acceptable. So मैंने उसको defect बुला दिया. Assume that you've gathered data and you found out that the mean of your process is currently at 28 minutes and you have a standard deviation of 2. You are essentially saying vis-a-vis this distance between the mean and the specification, how many standard deviations can I fit between them? So Z or Z score is a measure of number of standard deviations that fit between the mean and the specification. It is calculated as, अगर आप Z upper side का निकालना है, so you are essentially saying USL minus the mean upon standard deviation. अगर lower side का निकालना है, अगर आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ टूल करता है. फॉर इंस्टेंस जी सर, click stats, quality tools, capability analysis, normal. मुझे अभी अज्यूम करिए प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी निकालना है. सब ग्रुप साइज, बिकॉज एक ही कॉलम में डेटा पड़ा है इसलिए हम से सब ग्रुप साइज इज इक्वल टू 1. ठीक. लेट्स से आई हैव अ टारगेट, आई हैव अ लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट 250 किलोग्राम से कम का प्रोडक्शन नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. कैपेबिलिटी निकालने में स्पेसिफिकेशन मैंडेटरी है. प्रेस ओके. बाय डिफॉल्ट वो हमेशा पीपी का वैल्यू देगा. क्लिक ये अगेन. नाउ डू ऑप्शंस. बाय डिफॉल्ट वो हमेशा सीपी पीपी दिखाएगा. अगर आपको Z वैल्यू कैलकुलेट करना है तो you'll have to बेंचमार्क Z. प्रेस ओके, प्रेस ओके. आपका Z वैल्यू is 0.58. Let us understand the maths first and then do this. If I have a LSL, जो हम अभी assume करके चल रहे थे 250 पे, to be able to use Z LSL वाला formula, we said formula क्या है? Mean minus LSL upon standard deviation, which pretty much means that आपको ये सारे values calculate करने होंगे. You will need to calculate your mean, you will need to calculate your standard deviation equal to average equal to standard deviation आप सिंपली फॉर्मूले में इसको डाल रहे हो. मीन माइनस LSL डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. But this formula only works if your data is normal. तो जब आप ये कैलकुलेट करने बैठोगे, one of the first things that you will have to do is to assess कि आपका डेटा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है. स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, या तो मैं नॉर्मल तरीके से नॉर्मलिटी टेस्ट कर लूं या मैं ग्राफिकल समरी से भी नॉर्मलिटी कर सकता हूं. You get Anderson-Darling normality test का result. It is telling you whether your data is normal or non-normal. Or I can look at
नॉर्मलिटी टेस्ट, इट विल गिव द सेम रिजल्ट्स। ये भी एंडरसन डालेंगे, ये भी एंडरसन डालेंगे, ये भी एडी का ही लॉजिक इस्तेमाल करता है। अगर इसका एडवांस तरीका करना है, सो व्हाट आर वी सेइंग, टू असेस योर नॉर्मलिटी, to assess your normality, we looked at either graphical summary, या normality test, या अगर थोड़ा सा एडवांस करना है, स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन। नॉर्मलिटी वगैरह क्या कर रहा है, सीधा चेक करता है डेटा नॉर्मल है या नॉन नॉर्मल है। इफ यू वांट टू नो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ गुड गो टू प्लेस, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन। प्रेस ओके, इट विल गिव यू लॉट ऑफ मैथ्स। You have to look for the goodness of fit test का रिजल्ट, जिसका भी p वैल्यू हाईएस्ट आ रहा है, the highest p वैल्यू essentially represents कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका डेटा फॉलो कर रहा है। With me? Let's look at another number. हाईएस्ट पी वैल्यू किसका, जॉनसन्स इज 0.39, लॉजिस्टिक इज 0.227, गामा इज 0.8। अभी तक तो हाईएस्ट यही लग रहा है, जॉनसन्स लग रहा है। यस, ध्यान रखिएगा। ओनली टू सब ग्रुप्स, वन, इफ यू गेट द पी वैल्यू हाईएस्ट फॉर नॉर्मल और बॉक्स कॉक्स और Johnson's, then normal वाला option is applicable, otherwise non-normal वाला is applicable. Let me show you how. I said stats, quality tools, capability analysis. ओहो, हटाना ही पड़ेगा, just bear with me. Stats, quality tools, capability analysis for normal. ये नॉर्मल कब इस्तेमाल करना है, when either the p value of the normal distribution was the highest or the Johnson's was the highest या box cox was the highest। अगर नहीं था then you'll have to use non normal। अगर assume करिए ऐसा सिचुएशन होता कि अभी गामा का वैल्यू हाईएस्ट होता, तो then we would have chosen non normal वाला। stats, quality tools, capability analysis for normal, total breakage, अपर का मेरा टारगेट है 5 किलोग्राम, बिकॉज मेरा जॉनसन्स ट्रांसफॉर्मेशन हाईएस्ट है। जॉनसन्स एंड बॉक्स कॉक्स आर बोथ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स, तो मुझे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर जॉनसन्स आप चूज कर रहे हो तो बॉक्स कॉक्स आता, तो ऑप्शंस पे क्लिक करके बेंचमार्क जेड को एक्टिवेट करना होगा, प्रेस ओके, एंड यू विल गेट योर प्रोसेस कैपेबिलिटी। There, let's try this with another data. ये सब पहला काम, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन, स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट, ये हटाइए, अंदर क्लिक कीजिए, ये हटाइए, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, बैकस्पेस मार्क हटा दीजिए, डबल क्लिक कीजिए कलेक्शंस पे, ओके। We will get lot of numbers, scroll down, हमको चेक करना है गुडनेस ऑफ फिट का रिजल्ट, किसका पी वैल्यू हाईएस्ट आ रहा है,
Good. Now do the capability. Stats, quality tools, capability analysis for normal data. ये डिलीट कर दीजिए पहले. हाँ, ऑप्शन अच्छा किया हुआ है. बेंचमार्क Z होना चाहिए था. करेक्ट. ट्रांसफॉर्म जॉनसन भी क्लिक किया हुआ है. करेक्ट. ये हटाइए. ये हटा देते हैं पहले. यहाँ हमारे पास लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 8000. ओके. आपका Z स्कोर निकल के आया 0.32. ठीक है. एक और किसी चीज का निकाल लीजिए. स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शंस हटा दीजिए. टाइम ऑन सिस्टम का कर लीजिए. सेकंड वाला POS. कितने देर ऑफिस में रहे लोग. प्रेस ओके. फिर उसी का आया. फिर तो इजी है. स्टैट्स, क्वालिटी टूल्स, कैपेबिलिटी एनालिसिस फॉर नॉर्मल डेटा. टारगेट चेंज कर दीजिए. लोअर इज 148. benchmark Z, transform Johnson's. Okay. जो Z वैल्यू निकल के आया वो लॉन्ग टर्म Z वैल्यू है. Z that you've gotten, Z bench, एक्चुअली आपका Z लॉन्ग टर्म है. अगर आपको Z शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट है तो ZLT में 1.5 ऐड कर देते हैं. सो मेरा लॉन्ग टर्म आया है 0.15 प्लस 1.5. मेरा शॉर्ट टर्म केपेबिलिटी इज 1.65. सॉरी 1.65. ठीक. किसी और इंडेक्स का प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए. Then we proceed further from here. All right? Yes. But Z came into negative in this one? Ah, it will be. Negative also is there? Then how do you score out on that then in sigma then? So वही हो गया. So if your formula is saying Z USL is equal to USL minus mean upon standard deviation. So you want your mean to be less than USL. What if it is more? It will become negative. Similarly, ZLSL का formula is what? Mean minus LSL upon standard deviation. You want this to be smaller than this. उल्टा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा. और बहुत बार ऐसा होगा. In that case, जो नेगेटिव स्कोर आया वही पब्लिश करेंगे. Z score is only converted into sigma or something. That is sigma score. Sigma score. Then then how do we evaluate it? Okay, what it is all what like? So there is a Z table. Table is there. No? This is your Z table. What you see here, Is Z bench or Z bench. Z bench? No? This is your Z values. This is your DPO values. So if my Z score is 1, if Z is equal to 1, DPO कितना होगा? 1.59 by 10. This is 1.59 E negative 0.1. नेगेटिव 0.1 का मतलब डिनोमिनेटर में मैंने 1 लगा दिया. अगर ये E02 होता तो डिनोमिनेटर में मैंने
Let's look at this value. तो 2.28 डिनोमिनेटर में कितने जीरो लगाओ? E00 कितना है? 2. तो नीचे 2 zeros लगा दो. Here I have 3 zeros. Here I have 3 zeros. So this will become 1.22 divided by. This is DPO. मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया तो DPO. एक एक्सेल शीट खोल. टेबल से जीरो का वैल्यू कितना है? 5.0 E001. I will write this as equal to 5 divided by 10. 1 का मतलब 1.59 equal to 1.59. है? Yeah. 2 का मतलब 2 2.28 This is your DPO. If you want your DPMO, इसको सीधा सीधा मिलियन से मल्टीप्लाई कर देना. Equal to this into 246. If your business process is working at 1 sigma, what is your current DPMO? 1,59,000. If you want to talk in terms of fail percentage, DPO into 100 equal to DPO और DPO. तो अगर आप 0 सिग्मा पे काम कर रहे हैं तो कितना परसेंट फेलियर है? 50%. और I can call this as if your business is working at 1 sigma, what is your current fail percentage? 15.9. Pass is 84.1. If it is working at 2 sigma, 2.28. Find out values for the others, please. Look at 3. Copy paste. Paste. Equal to 1.35 कंट्रोल डी कर दो. कंट्रोल डी. फोर का निकालो. 5 का निकालो. This will be the talking time. After all evaluation, we have to talk.
Logic clear? Why error is coming this way? What is the error? Going beyond it. Arduino? Okay. You realize that? Yeah, understand. understood. Six Sigma goes up to this much. We are saying one way of assessing process capability is through the Z score. Another is through another value referred to as CPCPK. CP is also referred to as your inherent process capability. While CPK is your process performance index. This is what you were capable of. This is what you actually did with that capability. CP mathematically is equal to USL minus LSL upon 6 times the standard deviation. वो क्या था? There the denominator was only standard deviation. Here the denominator is 6 standard deviation. So essentially you are saying customer tolerance divided by normal distribution. CP possible in 3 forms. One, when CP is equal to 1. So remember the formula that we were using in the previous slide. We are saying CP is equal to USL minus LSL upon 6 standard deviation. So CP is equal to 1 कब होएगा? When customer tolerance is equal to normal distribution. जब denominator denominator दोनों same होएगा तभी होगा ये. Yes? So I am essentially saying that customer has given me a tolerance of let's say 120 to 160 and our normal process is exactly the same. So under normal conditions, you will always have 99.7374% of your product pass. When CP is equal to 1, 99.73% times you will produce pass product. So other times, the 0.27 times, it will create failed products. And even if there is slightest of special cause variation, you will end up creating defects. CP is equal to 1 is considered too tight for comfort. बहुत confined खेल रहे हो आप, फंस जाओगे. Slightest of variability, slightest of special cause variation will end up creating defects. दूसरा, CP greater than 1. Tolerance बड़ा है, normal distribution छोटा है. My customer gives me a specification to perform between 120 to 160. I am currently performing between 150 to 155. This is my normal distribution. So even if I still have room both sides. I am performing well within my specification. So CP greater than 1 is considered the best performance. Ideally, 1.33 to 1.67 is the preferred CP value. ऐसा नहीं कि because CP greater than 1 is good, so CP is equal to 14 बना लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं. Underutilization of resources हो जाएगा. So ideally, the industry norm is that you would want 1 by third or 1 2 by third. इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. The first condition when CP is less than 1. Customer wanted us to do 120 to 160. We are currently doing 100 to 180. This is my normal process. What is happening? By design, some part of the process is already creating defects.
some part is already going outside the specification. So CP less than 1 is considered bad design. CP is equal to 1, consider 2 tight for comfort. CP greater than 1, good. Hmm? But CP is mostly about design. Against that, against what you were capable of doing, what did you actually do is what is CPK. So I wanted, let's say, customer gave me a specification to be between 100 to 160. I therefore wanted my mean to be exactly at 130. I wanted, let's say, to be between 120 to 100. This is my normal distribution. This is what I wanted. I wanted my mean to be at 130. होगा नहीं, mean shift कर जाएगा either towards 160. So let's say your mean has moved to 140 or 150, wherever. CPK is measured as minimum of the CP on your upper side and CP on your lower side. Where CP on your upper side is USL minus mean on 3 standard deviation. CP on my lower side is equal to mean minus LSL by 3 standard. दोनों में से जो छोटा होगा उसको हम CP बोलेंगे, CPK बोलेंगे सर. Let's do this mathematically. I wanted my mean to be exactly at 145. No, 140. Let's say my current mean is at 160. My standard deviation so CP on my upper side is USL minus mean upon 3 standard deviation. USL mean CP on my lower side mean LSL standard deviation to it. But still, this value is the lower of these two values. So my CPK becomes 20 by 19 or 2 by 9. Okay? This is how you calculate. But again, when you have Excel, when you have Minitab, you don't do all of this. Ads, altitude, KLT analysis, यूटिलाइजेशन का निकालना है, ऊपर भी डाल देता हूँ ऑप्शंस, कैपेबिलिटी, पीपी वैल्यू निकल के आ गया. You have Minitab, you have Excel sheets, you don't need the manual calculation. It's straightforward. Please read through this. Questions हैं तो पूछ लीजिए.